Guys, guess where are we right now? Just behind me is the Kirodimal College from Delhi University. In front, we have FMS Faculty of Management Studies. So KMC is actually DU's creative powerhouse. This is the campus, by the way, that gave India celebrities like Amitabh Bachchan, Vijay Raj, many more. And today we have here with us the students from various colleges and faculties of Delhi University pursuing various courses. We'll be talking to them about CUET, their life at DU, what they like, what they don't like, and of course about the surprise Syastra CUET mock test series books. We'll also be getting them reviewed by them towards the end, so stay tuned because we'll be having vibrant conversations with lots of the students that we have. And let's get started. Yes, of course, we are thrown out of Kirodimal College, Delhi University. We have not been given any permission to shoot inside the premises, but we'll be carrying out anyways because we have good amount of people here. जहाँ से ये लोग खड़े होते हैं, line वहीं बन जाती है. Let's talk to them. Courses, college life, vibe. Of course, it's there. But what are the things they like? What are their pressing problems they are facing right now? It can be about the fees, placements, all these things, I assume. Right, so excited are they, and so are we. By the way, which is your college and course? My college is Kirodimal College and I'm doing physics honors. Awesome. I'm from Miranda House and I'm pursuing my chemistry honors from. Myself Swati, I am from Kirodimal College and my course is physics honors. So since we couldn't get in, they have to come outside to meet us and record this video. Yeah, of course, since we couldn't shoot here in the premise of KMC, we'll be setting up in Faculty of Arts and doing our rest of the conversation from there. So right now we are sitting in the Faculty of Arts campus premises. We are with many of our students from various campuses of DU, both north and south. By the way, I just came to know that it has 2 campuses, means campus has many colleges and faculties, which is of course very interesting. How many of you like Delhi winters? I especially like, except the pollution part. Yeah, so that's the worst, but Delhi winters is something really amazing. Like you need to experience that street foods and Sudama ki chai. Yeah. So let's start from the very beginning. Like which colleges were you targeting? Which did you get? And of course, which of the examination? What was your score? How did you prepare? All these. So of course, starting from you, Tomesh. Yeah. Hello, I'm Tomesh actually from Kirodimal College, BSc Honors Physics. This is my first year actually. Tomesh, what was your score in the CUET? Out of 750, it was around 370 actually. So we have a total of 750 in CUET. For PCM. For PCM. Yeah. Otherwise, it's 1,000, right? Yeah. For 4 subjects, it's 1,000, and then for 3 subjects, PCM, it's 750. Yeah. I am from KMC. I am currently doing BSc Honors in Physics. Actually, I was targeting ISER and prepared for that only from Vikram 2.0. But couldn't crack it, so I get into KMC here. My score was something around 350 in CUET. Awesome. Hello, my name is Rudra. I am from Kirodimal College. I got to know about ISERs in last month in April. So I didn't got chance to prepare much, so my score was low. But in CUET, I prepared and got a score of 462 out of 750. Awesome. What about Myself Swati, I am from Kirodimal College and my CUET score was around 390. Hello, I am Surbhi and currently I am pursuing BSc Chemistry Honors from Miranda House. So मेरा target actually मेरा drop year था and I was targeting ISER and मेरे ISER 50 rank से छूट भी गया unfortunately. But the experience was quite awesome. Like बहुत मज़ा आया उस दौरान. Unfortunately मैं यहीं मिरांडा में हूँ. Like ठीक है, it's good but. Hey guys, this is Diksha and I am from Bhaskaracharya College of Applied Sciences pursuing BSc Physics Honors and currently in second year. And these people know their score because they are in first year and मैं अपना score अभी भूल चुकी हूँ but still. I scored 550 out of 750. Hello, I am Pakhi Verma and I am pursuing Life Sciences at Maitri College. I don't remember my CUET score and as Soumya Bhaiya asked if there is any particular college you were targeting, so
I did not have any particular college in my mind that I was targeting. I just wanted to pursue life sciences because it has three diverse disciplines, that is zoology, botany and chemistry. And fortunately I got into it and I'm very happy. Let's talk about the campus life, crazy experiences that these guys have. So what's the best thing and worst thing, or any other thing you would like to share about your college DU in general? Get to meet many people from all across India. We share many cultures. I can say everything is best here except AQI. I don't like AQI here. Very poor air quality. यहाँ की कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी है. इवेंट्स वगैरह, प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं जो कि हम एंजॉय कर सकते हैं. Wildcard entry from Hindu College, and just now we were stopped from shooting by the campus security guards, but we took out our mobile phone and got started anyway. So right now this video is on the phone. And आपका क्या नाम है, कौन से कोर्स से आप हो? मेरा नाम सचिन भाटी है. मैं हिंदी ऑनर्स सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ. Hindi honors second year from Hindu College. This is Faculty of Arts. He was just roaming around and watching us discussing over there, and guards of course got attracted by him. क्या? Placements, what about in your college and any you know? नॉर्थ कैंपस के जो टॉप मोस्ट 5 to 6 कॉलेजेस है वहाँ की प्लेसमेंट्स आर वेरी ग्रेट, बट स्टिल द स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर रैंक कॉलेजेस दे डोंट गेट एनी प्लेस एनीवेयर. लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का डेटा नहीं है कि वो ये बताए कि कितने बच्चे कहाँ पर, कौन सी जगह पर, कितने पैकेज से प्लेस हुए. तो सो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. आईएसआर इज़ अ प्लेटफॉर्म जो रिसर्च कॉलेजेस के को ज़्यादा प्रमोट करता है. एंड इफ़ आई कंपेयर रिसर्च कॉलेजेस टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इन लोअर रैंक. नहीं है यहाँ पे कुछ भी रिसर्च. इफ़ आपके अंदर से कुछ है कि हाँ आपको रिसर्च करनी है, आपको इंटर्नशिप लेनी है, तो आप ले सकते हो. यू कैन डू दैट, बट स्टिल इफ यू थिंक दैट कॉलेज विल हेल्प यू इन दिस टू गेट इंटर्न एनी ऑफ द कॉलेजेस, टू गेट रिसर्च इन एनीवेयर एंड टू गेट प्लेस्ड, then Delhi University is the worst. Thanks a lot, Diksha. Wonderful insights about placements, and we sort of know that lots of things need to be improved. But are you going to appear in DUSU elections? नो बिल्कुल भी नहीं. मेरे अकेडमिक सेकेंड ईयर के तो वैसे ही बहुत ख़राब चल रहा है और ख़राब हो जाएंगे. लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा डिवेट हो जाऊंगी और नहीं. अच्छा, right now you're the general secretary. तो उसके बाद next year you can become the president or something like that? नो इवन आई कांट अपीयर इन इलेक्शंस एज Only once. यस. दूसरों में नहीं जाना मुझे. अच्छा, दूसरों में नहीं जाना. New CUET books by Syastra have been launched. If you haven't checked it out, do right now. But we are in Delhi University talking to our students who are already qualified CUET with great ranks in various colleges of DU, Hindu, Kirodi Mal, Miranda House, etc. But let's get the books reviewed by those students themselves. Let's see what they like and what they don't. So guys, over to you. What do you see? एक्चुअली ये बुक्स काफ़ी हेल्पफुल लग रही है मेरे को. मैंने जितना ओवरव्यू लिया है, आई थिंक प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स है. और मतलब मेहनत भी दिख रही है कि क्वेश्चंस काफ़ी डीप, मतलब अलग अलग जगह से सारे टॉपिक कवर करने की ट्राई की है. अगर मेरे पास ये बुक्स होती, आई थिंक मेरा रैंक बेटर ही होता, क्योंकि काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो आते हैं, एक्चुअल CUET में आते हैं. काफ़ी एग्जाम बेस्ड पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. तो आई गेस दैट्स इट. Yeah, books are really good. First of the thing that I liked is the trend analysis in the starting of the book. That is very much needed from student. And after that, the separation of the book. There are PYQs. You have questions related to based on PYQ. If you are preparing from book, you need solutions. So quite helpful for CUET. एज केमिस्ट्री की बुक है, तो केमिस्ट्री में लाइक होता है हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हैंडल करने के लिए, इंटर सब्जेक्ट्स. तो इसमें बहुत सही तरीके से वेटेज दिया हुआ है कि लाइक कौन कौन से टॉपिक के आपके कैसे कैसे वेटेज है. एंड सबसे CUET में ज़रूरी होता है PYQ. एंड मैंने इसमें देखा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से ईयर वाइज PYQ दिए गए हैं जो कि रियली बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए. एंड आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे. और दीक्षा? Okay, so I just reviewed the book for biology, and it includes almost all kinds of questions, including the assertion reasoning, comprehension based questions, and the PYQs also. It's good. By the way, it has QR codes towards the end, which you can scan and watch all the revision lectures chapter wise on YouTube. So all the lectures and one shot are already there.
And of course, since this is the first version, more and more questions will be added. The books will keep on getting updated. But we really actually wanted the students to take benefit of a specific resource for CUET. So that was the motive, and this was made, very rigorously, thorough proof checking and all those things. So like, any of you were not given any hostel room or what happened? Yeah. He has got. I got a hostel, but they are very limited actually. Hostels are very limited. In our college, BSc Physics Honors only gets 3 to 4 seats. Okay. But students are approximately 120, 125. 180. 180 almost. So And none of you have hostel rooms? just he have. Just I. Oh, you have, Tomesh. लाइक मेरे कॉलेज में बीएससी केमिस्ट्री से लाइक सिर्फ 2 बच्चों को अलॉट हुई हैं और जिसमें से कि रिजर्वेशन मैटर्स लाइक वो लोग डिस्टेंस को भी अज्यूम करते हैं बट सबसे पहले प्रायोरिटी रिजर्वेशन को देते हैं एंड बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड सीट्स हैं तो एकदम नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं हॉस्टल्स के. Living outside is So would you suggest it's important for PCM students to focus on biology for IIT because you suffered? यस एक्चुअली अगर आपको IIT का प्री नॉलेज नहीं है तो लास्ट के मंथ में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक ही एग्ज़ाम नहीं दे रहे हम. जैसे बाकी एग्ज़ाम होगी जैसे नेक्स्ट तो ठीक है उसके साथ ही होगी बाकी आई डोंट नो वेबजी हो गई VIT वेल्लोर की एक एग्ज़ाम होती है तो अलग अलग एग्जाम्स होती है तो उनके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है मतलब टाइम नहीं रहता उतना बायोलॉजी के लिए फोकस करने पे. इसका मतलब तुम पोकी भैया से नहीं पढ़ रहे हो. मैंने जो 2-3 क्वेश्चन IIT में सॉल्व किए वो पोकी भैया की वजह से ही हुए हैं. मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ एंड मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर बायोलॉजी में ही किया है अपने IIT के एग्जाम में. Are you sure? यस. PCM student सबसे ज्यादा स्कोर बायोलॉजी में किया है. जी में Which course were you in? केमिस्ट्री. नहीं, सायस्टा में. Which विक्रम 2.0. year long Vikram 2.0? वो मैंने बाद में लिया था बट फिर वो जो एक चल रहा था लास्ट Crash course? कोर्स आता है उससे मैंने वो करा था एंड लाइक पूकी भैया की तो मैं Fan? फैन हो गई थी भाई. And Pooki Bhaiya actually is very happy. और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी पार्थ सिंह भैया को. भैया आपके वजह से मुझे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मदद मिला था एंड मुझे आपके वजह से ही केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड आपके नोट्स भाई साहब बहुत लाजवाब रहते थे एंड वो नोट्स को मैं अभी तक पढ़ रही हूँ अपने ग्रेजुएशन एरा में and really those notes are very helpful. So sign a petition for Parth Bhaiya to teach for IIT JAM. He will do that. हाँ बिल्कुल. Yeah. बात भैया के लिए तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगा. मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बुरे हाल थे. 11th तक मेरे को लग रहा था कि ऑर्गेनिक में तो मेरे 0 ही आने वाले हैं. फिर 12th में थोड़ा थोड़ा हुआ लास्ट में मतलब हुआ. फिर लास्ट मंथ में मैंने जब IIT के टाइम उनसे पढ़ा केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक के रिएक्शन से मक्खन याद रह गए. मतलब IIT में मतलब मेरे ऑर्गेनिक के तो ऑलमोस्ट सारे सही हो गए थे. फिर CUET में भी मेरे को उसकी मदद मिल गई तो थैंक यू पार्थ भैया. थैंक यू वेरी मच. CUET offers more than 3 lakh seats for more than 240 universities across India. So this is a huge opportunity for anyone preparing for JEE, NEET, IIT or NEST because of course it's not possible for you to get seats in either aptitude test or NETs. We have students witnessing that phenomena and they are doing really excellent in various colleges of Delhi University right now. And we have brought the very recently launched CUET books with us today and we have got them reviewed. By the way, guys, just wanted to ask you, are those books a yeah or nah? Yeah! Now, one more question I'll ask you is actually DU worth for South Indian students because many of them are not aware. आई थिंक इट्स यस प्रेफरेबल. आ सकते हो आप. ऐसा यहाँ पर कोई भी वो नहीं है डिस्क्रिमिनेशन जैसा कोई इशू नहीं है. लैंग्वेज बैरियर्स इंग्लिश सब लोग जानते हैं सब लोग बोलते हैं और आ सकते हो. Like you guys have lots of fun if you come in Delhi and like Kerala बहुत peaceful state है but still आप Delhi University में आओगे आप यहाँ पे 3 years 4 years spend करोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा best experience होगा बहुत ही अच्छा exposure होगा and as such कोई problem नहीं आती क्योंकि for Kerala students for South Indian students for North Indian students we have the clubs we have the society specific for them like आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे and if I talk about specifically to नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स सो वो स्टूडेंट्स तो यहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटीज़ एंड डांस सोसाइटीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है. सो या आप लोग को बहुत बेस्ट एक्सपोजर होगा. Are they also here? You have South Indian friends in your colleges? Yes, I have lots of friends. Yes. Okay.
And yeah, you want to say something? मेरी भी एक फ्रेंड है लाइक वो उड़ीसा से है एंड एक फ्रेंड है जो मेरी केरला से है एंड दे बोथ आर एंजॉइंग द लाइफ ऑफ कैंपस एट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड लाइक उनको ऐसा हो गया है कि यार बस अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. Yeah, because I also got this feedback from many of the South Indian people that Delhi is very welcoming. Yes. Yeah. Right? And irrespective of where are you from, people are very, behavior traits, all these are different things, language, culture, but in general, people and the society culture is very welcoming to everyone up from the Yes, outside, yes. right? Outside Delhi. दिल्ली दिल वालों की है, so yeah. Yeah, Dil Walo Ki Delhi. And by the way, if you want us to cover your college as well, if you're in Delhi NCR, let us know. We'll visit you. We'll talk about stuff like we did in the Delhi University today. And all the best.